Hi everyone. Let me just know in the chat box if I am clearly audible. चलो guys, then थोड़ा 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, लोगों को आने देते हैं. तो इस सेशन में basically I'll tell you how I scored 99, how you can score 99 in CAT Quant, क्या strategy रहनी चाहिए आपकी starting from now, and also for those who have started earlier in the year. Additionally, I'll also cater to your doubts, so you can just drop your queries in the comments, the chat box. We'll start with that after like 15 to 20 minutes. So just let me know in the comments एक बार, out of roughly 55 people who are live, how many of you are non-engineers and think that quant is difficult? So guys, I really understand the pain of non-engineers because इस साल मेरा भाई खुद देगा कैट. ठीक है, तो वो भी अपने बीबीए फाइनल ईयर में है. वो भी नॉन इंजीनियर है, उसके लिए भी मतलब क्वांट एक पेन पॉइंट है. ऑल्दो उसने किया है पहले 11th 12th में, बट काफ़ी टच छूट जाते हैं ना. ऑलमोस्ट 3 साल हो गए. तो आई अंडरस्टैंड दैट क्वांट इज अ पेन पॉइंट फॉर मैनी पीपल, नॉट जस्ट नॉन इंजीनियर्स बट ऑल्सो इंजीनियर्स. क्योंकि क्वांट में क्या होता है कि यू थिंक, engineers think that okay quant तो मैंने करा हुआ है पहले, I will be able to solve it, so they tend to take it a little lightly. और फिर जब एग्जाम देने बैठते हैं, नहीं आते हैं मार्क्स, तो एक टेंशन होती है यार, क्वांट नहीं बन रहा है. और नॉन इंजीनियर्स का ये रहता है कि they have this bias रहता है that I am a non-engineer. Even before trying out the questions, even before seeing whatever questions are asked, people have this assumption, non-engineers, that मुझे दिक्कत होने वाली है, जबकि ऐसा नहीं है. तो कैट स्टार्ट करने से पहले आपको ये बात बताई जाती है कि 10th लेवल की मैथ्स रहती है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 10th लेवल की नहीं रहती है. 10th तक आपके जो सब्जेक्ट्स रहते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन जो आपको ना टॉपिक्स कराए जाते हैं, वही सेम टॉपिक्स रहते हैं, बस थोड़ा एडवांस लेवल होता है. ठीक है, तो अगर आपने 10th तक मैथ्स पढ़ी है, तो आपने जो जो आपको कैट में आप पढ़ोगे क्वांट के लिए, वो आपने पहले करा हुआ है. डेफिनेटली वो डिफिकल्टी लेवल नहीं है, थोड़ी ज़्यादा रहेगी, बट आपको बेसिक्स आपको आपने पढ़े हैं. इट इज़ नॉट लाइक यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. आप सबने पहले करा हुआ है. बीट नंबर सिस्टम, बीट अरिथमेटिक. अरिथमेटिक में रेशियो प्रोपोर्शन रहता है, आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस रहता है. तो ये सारी बेसिक्स, एल्जेब्रा भी आपने 10th में करा हुआ है, ज्योमेट्री करा हुआ है, देन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है. ये मेनली चीज़ें रहती हैं क्वांट में. दिस इज समथिंग विच एवरी वन हैज डन. सो यू फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट नीड टू वरी कि मैंने कभी करा नहीं है तो वॉट विल इट बी. ठीक है, तो बेस्ट थिंग फॉर दोज हु आर स्टार्टिंग राइट नाउ कि कैट का क्वांट मैं कैसे कवर करूं आगे 6 महीने में. बेस्ट थिंग टू स्टार्ट राइट नाउ इज आप लास्ट ईयर का पेपर उठा लो.
कैट 23 क्वांट का 22 क्वेश्चन रहते हैं लगभग, 3 स्लॉट थे। तो एक बार तीनों स्लॉट के क्वेश्चंस इफ नॉट पॉसिबल कि सॉल्व करो, एक बार जस्ट गो थ्रू कर लो। गो थ्रू करोगे यू विल रियलाइज दैट 7 questions out of 22 are roughly from arithmetic. ठीक है, 7 that is like 1/3 of the questions, and if you get even 7 correct in the exam, in the CAT exam, even if you get 7 total fully correct and no negative marking, then you will definitely score above 93 percentile at least in quant. सिर्फ 7 क्वेश्चन, 22 में से सिर्फ 7 क्वेश्चन सही करने हैं तो आपको 93 परसेंटाइल भी आ जाएगा। ठीक है, तो क्वांट में क्या होता है, यू शुड ऑलवेज प्ले ऑन योर एक्यूरेसी, यू शुड नो योर स्ट्रेंथ्स, यू शुड नो योर वीकनेसेस, एंड यू शुड नो कि पेपर में पूछते क्या हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता हर साल। जैसे लास्ट ईयर देखा जाए, लास्ट ईयर से पहले तक ये होता था कि अरिथमेटिक यूज टू बी द बिगेस्ट चंक। लगभग आपके 8 से 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक के रहते थे, और बाकी आपके 5-6 क्वेश्चन अलजेब्रा के, 5-6 ज्योमेट्री के, और एक आधा क्वेश्चन आपका मॉडर्न मैथ से रहेगा, मोस्ट ऑफली कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन से, राइट। सो व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर, लास्ट ईयर अलजेब्रा went a little ahead and almost matched the level of arithmetic in terms of the number of questions asked. So roughly 7 each questions of algebra and arithmetic were asked, and geometry questions थोड़े से कम हो गए थे, roughly 4 questions थे, एंड मॉडर्न मैथ्स का एक आधा क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का एक आधा क्वेश्चन, राइट। सो यू शुड नो दैट इफ योर अरिथमेटिक इज स्ट्रॉन्ग, अरिथमेटिक, देखो, personally I think it is the easiest arithmetic compared to other subjects, other topics like algebra. Algebra I personally used to be, it is the most difficult. So in algebra you have roughly 6 to 7 topics. So out of 6 to 7 topics, I knew that maximum minima, for example arithmetic progression, those series progressions, that was a topic which I felt that is my strong suit. तो जरूरी नहीं है कि if you think that algebra is difficult you leave that totally aside. You have to cherry pick your strengths and weaknesses वाले जो आपके subjects topics हैं algebra में भी। जैसे मैंने आपको बताया, you might have your personal favorites, so pick those, उन पे work करो, and those topics which you think are little difficult, उन्हें भी कर लो। हो सकता है कोई एकदम ही बेसिक सा क्वेश्चन आ जाए, so don't leave anything. People say that I am finding permutation combination difficult, should I leave it? अगर मैं आपको बोलूं कि हाँ, देखो, अगर if this question was asked by someone who is like 1 month away from CAT and is asking कि should I start permutation combination, then my answer would have been no, don't do it, it's not worth it, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ही आएंगे मैक्सिमम। ठीक है, कल लास्ट ईयर तो मतलब 0 क्वेश्चंस भी आए थे किसी स्लॉट में। बट पीपल हु आर स्टार्टिंग नाउ, हु हैव एटलीस्ट लाइक 2 महीने पहले भी आपके पास टाइम रहेगा, देन आई वुड सजेस्ट दैट डू ऑल द टॉपिक्स, क्योंकि हो सकता है कि बेसिक सा क्वेश्चन भी आ जाए किसी से, राइट। सो यू माइट लीव permutation combination thinking ki okay, this chessboard concept is very difficult, I'm not able to understand. So don't frame an overall perspective about permutation combination based on a certain few questions. At least do the basics, so that if you get a very easy question you should be able to do it, right? And never ever judge the difficulty level of a question in quant based on the length of the question. I'll tell you, majority of the questions which look lengthy are the easiest to solve. So have this habit of not getting scared. Solve a lot of questions, have a lot of resources. The best resource again is your PYQ, those who are starting. That is why in iQuanta also they have this PYQ classes after every topic that is covered, or like arithmetic में भी batch 2 में हुआ था, चल रहा है, 2 टॉपिक कवर हुए, परसेंटेजेस एंड प्रॉफिट लॉस लास्ट वीक ही स्टार्ट हुआ है। तो आफ्टर दोज 2 क्लासेस PYQ class was held, so that people know what they are really preparing for. आपने टॉपिक्स कर लिए ठीक है, बट क्लास में जो करा आपने, असाइनमेंट करा आपने, बाकी लेक्चर्स करे आपने, इधर उधर रिसोर्सेज से करा, बट अनलेस यू नो कि एक्चुअल एग्जाम में किस लेवल का पूछा जाता है, यू माइट नॉट feel that confidence is very important. So once you have done solving the PYQs you will definitely feel confident, okay मैंने CAT के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए and this is what I can do. And even if you are not able to solve, at least you will know what I have to do now. अभी तक आपने नहीं किया था ठीक है, but once you know that okay, this is my weakness, this is
where I'm lacking, you still have a lot of time. You might be worried, probably if someone who is starting just 2 months before the CAT exam might be worried. But right now, if you're starting, you have 6 months on your hand. You have ample amount of time. For engineers, 6 months is like, you do not have any excuse. If you're starting right now, quant बोलते हैं कि engineers के लिए it is a little, they have it a little easy. Not necessarily true, but ठीक है, मतलब नॉन इंजीनियर से थोड़ा सा एज रहता है. तो दिस इज डेफिनेटली द बेस्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट. एंड फॉर नॉन इंजीनियर्स हु आर स्टार्टिंग, you also have a strong suits. Okay, it's not that only engineers are uh, have an advantage in CAT. Non-engineers usually have BARC as their strong suit, which engineers struggle with, right? That is why भी iQuanta में I think कोई VRC product भी निकालने वाले हैं 5-10 दिन में इस month. So I'll just now go through your questions on the chat. If someone has asked a question काफी पहले, तो अभी recent दोबारा डाल दो. So for those who want to start quants from basics, एक बार स्ट्रक्चर देख लो. स्ट्रक्चर समझो पेपर का कैसा आता है, वेटेज क्या रहता है. जैसे मैंने बताया लास्ट year CAT 2023, there were roughly 7 questions each from algebra and arithmetic. Arithmetic में you will find at least 1 or 2 questions from time, speed, distance. Okay, and algebra में also you will always find a question from series and progressions. So there are some topics from which you will always find some questions. So do that. And this is topic called geometry. Very, very, matlab, was personally my favorite geometry after arithmetic. So geometry, the best part about geometry is that even if you do not know a lot of concepts, you can solve it. Just you need to draw it, right? If you're given some points, if you're given the point, let's say 2, 3 on the XY plane, you can mark that point. And if you're asked to calculate the distance from so and so point to this point, at least you can make a calculated guess. Okay, you can use Pythagoras, you can use the distance formula. If you do not know the distance formula, you can still use Pythagoras, right? So ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा जुगाड़ लगता है. जुगाड़ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्वांट. सो व्हाट happens is sometimes the options are also so made that 3 out of the 4 options will be very much easy to eliminate. Okay, for example, if you are asked a question something like which of the following uh, you know values will not fit into so and so thing, equation or some something in geometry. So options दिए रहेंगे, some value will be like 11, 12, 13, 14. So in such questions what happens is usually the values on the extremes are the answers. So obviously 12 and 13 you can uh, remove that. The answer would be either 11 or 14. And even if you know that, you have a 50% probability of getting the question correct. So reading the options is also very important. That is one more suggestion that I'll give to you. So Sakshi is asking how to solve advanced questions of percentage, profit loss. I am able to solve the basic ones, but struggling when it comes to solving my coaching sheets and advanced questions. Okay, Sakshi. So I'll tell you one thing. What happens in CAT is आपको जो questions पूछे जाते हैं, you cannot really fit all of them into one category. That this question was no percentages only. Questions mixed concepts के रहते हैं. So sometimes you might need to know ratio proportion के concepts before you can attempt a question which predominantly falls into the percentages category according to CAT. So there are multiple combination of various uh, टॉपिक्स दैट आर आस्क्ड इन कैट. तो एक बार आपके बेसिक्स, आप रेशियो प्रोपोर्शन कर लो, आप एलिगेशन मिक्सचर एलिगेशन कर लो, आप परसेंटेजेस कर लो, प्रॉफिट लॉस कर लो, डिसऑनेस्ट सेलर कर लो. ये सारे जब हो जाएंगे उसके बाद आप PYQs करोगे ना, तो यू विल बी एट अ फार बेटर in a far better position. Because I'll tell you what, percentages as such is percentages, profit and loss, these are the foundations of arithmetic, right? So pers- basically percentages. So percentage is something which you will find everywhere. In profit and loss also you will find percentages. Some people might say that okay, percentages is such an important topic, but you had only a couple of classes for that. So why are you having only a couple of classes?
some people might question some coachings, but I'll tell you what, percentages is just the basic building block, and it will be used in all the subsequent chapters. Profit loss में आपको बहुत काम आता है percentages का, mixture allocation में बहुत आता है. So in every topic of arithmetic you will use percentages. So yeah, if you're able to solve the basic ones now and CAT के नहीं हो रहे, that is probably because CAT में और मिक्स कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच प्रॉब्ली यू हैव नॉट कवर्ड येट, या फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं है. एंड कैट के क्वेश्चन थोड़े लेंदी भी रहते हैं इन द सेंस कि आप पढ़ोगे तो आपको लगता है कि बहुत कुछ करना पड़ेगा, तो एक वो साइकोलॉजिकली एक बैरियर क्रिएट हो जाता है. बट परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, दीज आर लाइक वेरी बेसिक क्वेश्चंस इन कैट. इसमें मतलब अनसॉल्वेबल या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है मुझे कब तक हिस्ट्री में कि ठीक है ये वाला क्वेश्चन मुझे परसेंटेजेस का छोड़ देना था. दिस वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. All of them are easy to do. So engineer facing difficulty in RCs. दीपेश, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा ये क्वांट पे फोकस रखेंगे हम इस सेशन को, और इंजीनियर्स के लिए भी आई क्वांट कुछ निकाल रहा है, इंजीनियर्स प्रोडक्ट फॉर VARC, तो जस्ट फॉलो दैट. ग्रुप पे पोस्ट होता रहता है, पब्लिक ग्रुप पे. See, Sakshi, how to improve arithmetic? See, 90% of the students will find arithmetic easier than other topics. Other topics like algebra, geometry. Okay, so you need to understand कि अभी जो आप कर रहे हो arithmetic, you have to make it a strong point. At least 90% of the students have arithmetic as a strong point when they give the exam. So practice is the key. The more questions you practice, the variety of questions you do, that will help you. क्योंकि आप कॉन्सेप्ट्स कितने भी बार रिवाइज कर लो, फॉर्मूलाज देखो, फॉर्मूलाज, आई एम नॉट अ बिलीवर ऑफ फॉर्मूलाज. फॉर एग्जांपल इन टाइम स्पीड डिस्टेंस, द ओनली टू फॉर्मूलाज दैट आई फाउंड वेरी इंपॉर्टेंट वर डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, बेसिक वाला, और दूसरा आपका रहता था टी, द टाइम टू मीट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ T1 T2. सो दीज वर द ओनली टू फॉर्मूलाज आई बिलीव जो मुझे टाइम स्पीड डिस्टेंस में आई काइंड ऑफ memorized, क्योंकि बाकी were more kind of intuitive. When you solve the question through its natural process, you will form a better understanding. And if you just run behind the formulas, you will get confused at some point of the time of the other. Because you need to understand that permutation combination में there are a lot of formulas which sometimes you have to learn, the important ones. In geometry, you have formulas which you cannot like let go. You cannot not remember Apollonius theorem. आप एग्जाम में बैठ के Apollonius को नहीं कर सकते derive. So those are some formulas which you need to learn. So selectively पिक करो formulas आपको क्या याद करने हैं और क्या आप you know कॉमन सेंस से आप याद रख सकते हो. यू डू नॉट हैव टू मग अप एवरी फॉर्मूला. सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग. देन my algebra and arithmetic are good, almost 98% accuracy in PYQs, but all other topics are like shit. What should I do? See, if algebra and arithmetic are good, it's like you have more than around 60% of the paper is sorted, right? So if you get like 14 questions correct, you are already 99.5 plus. Don't don't need to worry यार ऐसा. Algebra, arithmetic are good. बचा क्या आपका geometry बचा, and you have a lot of time to focus on geometry. Geometry में last year थोड़ी कम क्वेश्चन आए थे, but आ सकता है इस बार कुछ भी हो सकता है. I think Ahmedabad is conducting this year, right? Guys, focus on accuracy and quant. You should not get wrong answers in arithmetic. In sorry, quant. आपके 22 questions हैं. If you are attempting, let's say 10 of them, try to ensure that you get at least 80% accuracy. अगर आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे 80% accuracy से, you will get 95 percentile. Okay, so attempting 10 questions with 80% accuracy is better than attempting 15 questions with 50% accuracy. ठीक है, so pick your questions. We will have more session about how to take a mock in the coming series of this Carnival. I have not scored well in 10th. Can I get IM if I score good in CAT?
Gurleen, see, getting IIM is a very broad question. IIM is not like one college. IIM अहमदाबाद भी है, IIM अमृतसर भी है, ठीक है, IIM कोഴിकोड भी है, और IIM एक और के खुल रहा है असम में, वो भी है. तो getting into IIM should not be your dream. Getting into, let's say, the old IIMs, the legacy IIMs, the new IIMs, and the baby IIMs. वैसे अपना ड्रीम टारगेट करो. So the amount of effort you need to put to get into IIM अमृतसर compared to IIM अहमदाबाद will be very different. ठीक है, किसी बंदे का 92 परसेंटाइल पे भी हो जाएगा अमृतसर कन्वर्ट, बट फॉर गेटिंग अहमदाबाद कन्वर्ट यू नीड 99.5 अराउंड एटलीस्ट. ठीक है, तो इफ यू आर एलिजिबल टू गिव कैट, आपके 10th में जो भी रिजल्ट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लो. इफ यू आर एलिजिबल देन यू कैन गेट आई. सो एलिजिबिलिटी इसीलिए होती है कि मतलब उन्हें क्यों फालतू में वो बिठाएंगे ना किसी को, कि अगर आपके मार्क्स नहीं है और आगे जाकर वो जीडीपी में आपको वो नहीं लेने वाले हैं, तो वाई विल दे मेक दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सो इफ यू आर एलिजिबल टू गिव कैट, यू कैन गेट इनटू आई. एंड गाइस, डोंट वरी अबाउट योर academics. जो हो चुका है, जो आपका पास्ट है, जो आपका प्रोफाइल है, देयर इज नो पॉइंट इन आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट दैट. ऑनेस्टली, इफ यू वांट टू डू एन एमबीए एंड यू आर एलिजिबल फॉर कैट, जस्ट डोंट आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट योर प्रोफाइल कि मेरा होगा नहीं होगा. आप एलिजिबल हो तो आप अपना 100% दो. आपके focus should be on getting on maximizing your percentile. If you get 99 percentile, 99.5 plus, even 98, 97 in other cases, you stand a very good chance of getting a call from the IIMs or dream B schools. And then uske baad jo second leg start hota hai preparation ka, that is a GDPI. That is a whole together different ball game that we will discuss later on. But until CAT, do not worry about your profile. Ideal work experience before MBA. सी, ऐसा कुछ नहीं रहता. स्वीट स्पॉट बोलते हैं 3 साल का. इट्स लाइक अ बेल कर्व लाइक दिस. ओके, सो 3 years पे मैक्सिमम यू गेट द मैक्सिमम स्कोर, एंड 2 years and 4 years you get the same score. 1 year and 5 year you get same score like that. तो ऐसा पर कुछ नहीं है फाइनल. मतलब there are many IIMs. Example, I think FMS, IIM Calcutta, FMS, they have a high amount of freshers. Roughly 50% are freshers. ठीक है, तो ऐसा जनरलाइजेशन नहीं है कि विच इज द स्वीट स्पॉट बेस्ट वर्क एक्स कितना होना चाहिए. बट इट इज मोर अबाउट द पर्सनल. सी, व्हेन यू गेन वर्क एक्स ना, योर रीजन ऑफ गोइंग फॉर एन एमबीए, ऑफ डूइंग एन एमबीए, बिकम स्ट्रॉन्गर. फॉर एग्जांपल, आई माई सेल्फ वेंट, wrote exams. I had 31 months of work ex, roughly 2.5 years. उसके बाद मैंने सोचा था ठीक है, अब मुझे एमबीए करना है. मैं ज़्यादा श्योर था कि मुझे क्यों करना है. Okay, so see workex as that. Don't see, for example, you are placed in college and you think, okay, अब मैं MBA 2 साल की नौकरी के बाद करूँगा. Don't think like that. Enjoy the work. If you feel while you're working that, okay, now is the point when I need to do an MBA to upskill myself, then do it. Is IIMs possible for someone with really low ACADS, OBC male, arts background, 2 years gap? See, 2 years gap, व्हाट डिड यू डू इन दोस 2 years? अगर आप सिर्फ कैट की तैयारी कर रहे हो तो आपको इंटरव्यूज में दिक्कत होगी. यू नीड टू जस्टिफाइड इन द इंटरव्यू कि आप 2 साल अपनी जिंदगी में कैट के अलावा भी कुछ कर रहे हो. क्योंकि कैट ऐसा कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है कि आपको 2-3 साल आप कैट ही दे रहे हो. इट्स नॉट लाइक अ मेडिकल एग्जाम जिसमें लोग ड्रॉप लेते हैं सिर्फ पढ़ने के लिए. ठीक है, तो कैट के लिए आप कर रहे हो तैयारी, आपका ड्रॉप ही चल रहा है, आपका 1 साल 2 साल हो गया, तो डू समथिंग ऑन योर साइड. जरूरी नहीं है दैट यू हैव टू नो लाइक कोई पार्ट टाइम जॉब करना है या फिर इंटर्नशिप करनी है. जस्ट ज्वाइन एन एनजीओ, पिक अप अ हॉबी. इफ यू हैव लाइक अ वेट लॉस जर्नी, आपने लास्ट 1 साल में यू हैव फोकस्ड अ लॉट ऑन योर हेल्थ, यू हैव लाइक लॉस्ट 10 to 15 kgs or gained your underweight, and that is also a thing that can be mentioned in the interviews. But if you have a gap, मेक श्योर कि आपके गैप ईयर में यू नॉट से कि मैंने बस कैट की तैयारी के लिए गैप ईयर लिया था, सिर्फ वही किया. डू समथिंग सब्सटैंशियल एज वेल. See, career gap is not a problem. I myself have roughly
10 to 15 people in my batch who are UPSC aspirant, who were UPSC aspirants. तो उनका है करियर में 3 4 5 साल का गैप भी, एंड दे आर कंफर्टेबली हियर. सो इट्स नॉट अबाउट द गैप दैट विल ट्रबल यू, इट इज अबाउट what you did in those gap years which matters. Strategy for hitting 99 percentile from 97 percentile earlier. See, it is not a stark difference. 97 से 99 के लिए, I mean someone who's already scoring 97 already knows कि कहाँ पर मैंने गलती की थी, तो 99 लाना shouldn't be a difficult task. Yeah, they can be a strategy for someone who has scored 80 percentile, अब उसे 99 चाहिए, उसके लिए स्ट्रैटेजी बताना सही है. बट 99 97 नॉट मच डिफरेंस. जो कर रहे हो सही कर रहे हो, थोड़ी और मेहनत करो बस. हाउ टू कंट्रोल द रॉन्ग आंसर्स. सी, आपका क्वांट में इफ यू आर गिविंग अ मॉक, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस रहते हैं. सो इंटीजर टाइप में इफ यू गेट अ रॉन्ग आंसर, इट इज ओके, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम गया, बट यू नॉट गेट अ नेगेटिव मार्क. बट इफ यू आर मार्किंग द रॉन्ग आंसर, जो आपके ऑप्शंस वाले रहते हैं एमसीक्यू, देन दैट शुड बी समथिंग विच शुड बी मिनिमाइज द मोस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि उसमें यू विल गेट नेगेटिव मार्क्स. हाउ टू मिनिमाइज दैट? तुक्के नहीं मारने हैं पहले तो, ठीक है. पॉइंट इज नॉट तुक्का कि जय माता दी कर दिया, वैसा नहीं करना है. यू शुड चेरी पिक द क्वेश्चंस, यू शुड पिक द राइट क्वेश्चंस इन द एग्जाम. ठीक है, ये मुझे आता है, अटेम्प्ट दोस, कॉन्फिडेंटली मार्क द आंसर एंड देन मूव अहेड. से आइट्रेशंस में सॉल्व करने होते हैं मॉक्स, दैट विल कवर इन सेपरेट पार्ट ऑफ द सीरीज. डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वांट क्वेश्चंस इन ज़ैट इन कंपैरिजन टू कैट. देखो, थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ, थोड़ा सा इजी रह सकता है, बट इतना डिफरेंस भी नहीं रहता है. थोड़ा आपको मॉडर्न मैथ्स के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कैट में आजकल नहीं आ रहे इतने, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह के. बाकी सही है, मतलब अगर आप कैट की तैयारी कर रहे हो तो आपके सारे एग्जाम्स की हो ही जाती है. जैट के लिए आपको 1 महीने का गैप मिलता है बिटवीन कैट एंड जैट, तो जो एडिशनल सेक्शन आ जाता है डिसीजन मेकिंग, दैट यू कैन कवर इन दैट 1 month, दैट इज इनफ. सो फॉर समवन हु इज aiming to get into a B school this year, focus on CAT, right? CAT तक CAT पे फोकस करो, unless you're giving NMAT and some other exam जो शायद पहले भी हो जाता है CAT से. Just be aware what all forms you have to fill. Just study for CAT. There's no separate studies that are needed for different exams as such. CAT तक तो सिर्फ CAT की तैयारी करो. कैलकाटा सेटिंग द पेपर, तो हम लोग क्या प्रिपेयर करें टफ क्वांट के लिए? देखो, ऐसा कुछ नहीं है, सब स्पेकुलेशंस रहते हैं. कुछ अलग तैयारी नहीं करनी होती, कौन कंडक्ट करा रहा है उसके हिसाब से. सो टाइम की एक इशू रहता है पीपल को, दैट ओके, यू आर दे आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, बट इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. सो सी, इट विल इम्प्रूव विद टाइम. आप तैयारी कर रहे हो शुरू में, जब व्हेन यू आर लर्निंग द टॉपिक, व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस फॉर द फर्स्ट टाइम, डोंट कीप अ चेक ऑफ द टाइम. तब फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, फोकस ऑन बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट. उसके बाद व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, आपने सोचा ठीक है, ओके, आई विल सॉल्व 22 क्वेश्चंस, जैसे कैट में आते हैं 22 क्वेश्चन. आई विल स्टार्ट अ टाइमर ऑफ 40 minutes एंड आई विल सी कि मैं कितनी देर में कर पा रहा हूँ. या फिर ऑन एन एवरेज अगर आप सोच रहे हो कि मुझे 2 मिनट में या 3 मिनट में क्वेश्चन करना है, तो आई विल सॉल्व दीज 22 क्वेश्चंस कंप्लीटली इन 1 hour एंड देन सी द प्रोग्रेस. Then only you will understand ki how fast you are. So keep a timer, get a stopwatch. Is अरुण शर्मा डिफिकल्ट? यार, अरुण शर्मा थोड़ी सी आउटडेट हो गई है. मैं तो आई एम नॉट रियली श्योर, आई नेवर ओपन अरुण शर्मा. बट व्हाट आई हर्ड इज उसका जो LOD 3 रहता है, दैट इज नॉट रियली रिक्वायर्ड टू सॉल्व. काफी ज्यादा आई थिंक डिफिकल्ट रहता है, तो LOD 1 और 2 कर लो अगर आप अरुण शर्मा फॉलो कर रहे हो. बाकी और भी काफी बुक्स हैं, iQuanta ने भी नया लॉन्च किया है, दैट इज लाइक रियली अपडेटेड, काफी रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं. कैन गो थ्रू दैट एज वेल. And when can we which book to refer? And guys, one thing that I've noticed is people run behind a lot of strategies. So strategy बता दो, strategy बता दो, सर टाइम टेबल दे दो, सर रिवीजन प्लान बता दो. देखो, कुछ नहीं हो ना. आप खुद, you are 20 to 22 year old adults, right? You already know you are the best person to devise your own strategy. You know where you are weak. You have everything at your disposal, यार.
गूगल इज देयर, द होल इंटरनेट इज देयर, चैट जीपीटी इज देयर. आपको वीआरसी में दिक्कत है, जीपीटी का यूज करो, feed it the RC, it will tell you, it will give you analysis, it will give you the meaning, it will give you the whole gist of the passage, it will help you solve questions. You have everything at your disposal. You have all the resources. So स्ट्रैटेजी की जगह जस्ट स्टार्ट. आपको मन करे कि यार मुझे कोई स्ट्रैटेजी बता दो जिस टाइम आपके माइंड में ये चल रहा है, जस्ट ओपन योर बुक एंड स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस. दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता. इट्स लाइक बोलने में अच्छा लगता है ये स्ट्रैटेजी थी, बट इट्स ऑल अबाउट पुटिंग इन द हार्ड वर्क एंड सॉल्विंग द क्वेश्चंस. यू नो योर स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस. आपसे ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी आपकी कोई नहीं बता सकता. सो कितना टाइम डिवोट करना है किस टॉपिक को. सी फॉर समवन हु इज स्टार्टिंग राइट नाउ, 3 sections, quant, VRC and ALR. So use the initial 10 days to understand what are your weak areas. Some people have VRC as their weak area, so they have to devote more time towards that. Some have DILR and some have like तीनों ही weak हैं, तो उसमें equal time devote करना है. तो ऐसा नहीं है कि you have to study each subject every day. What you can do is कि हर दिन pick 2 subjects or 1 subject also. If you think that your quant is strong, then what you can do is practice quant every second day or every third day, and include VRC in your daily routine. VRC के at least 4-5 RC रोज करो. It's very much dependent. Be self aware. तब मैं बोल रहा हूँ एक PYQ उठाओ, try to solve those questions, and if you're not able to solve, at least see the solutions. You will understand. iQuanta की वेबसाइट पे सारे 2000 से लेके 2023 तक के सारे कैट के पेपर्स विद सॉल्यूशंस हैं, so you can go through that. Sir, I'm weak in cons. Is it okay if I cover only arithmetic, geometry and algebra for cat? यार सब तो हो ही गया. ये कवर कर लिया आपने तो आपके 20 क्वेश्चन तो हो ही गए 22 में से. ठीक है. जो बचा नंबर सिस्टम बचा है. नंबर सिस्टम इज लाइक not really a topic in itself. Number system is something which you need to know. You might not really able to answer a question of arithmetic if you do not know the basic of numbers, कि कितने फैक्टर्स होते हैं या फिर मैं कितने 2 power n का जो रहता है चीज के लॉग्स में काम आ जाता है नंबर सिस्टम का थोड़ा. तो नंबर सिस्टम इज लाइक द बेस. देयर इज नो क्वेश्चन आल्सो व्हिच अराइजेस ऑफ लीविंग नंबर सिस्टम. दैट्स लाइक आस्किंग कि मैं बिल्डिंग सीधे बनाना चालू कर दूं विदाउट लेइंग द फाउंडेशन, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, राइट. सो यू नीड टू ले द फाउंडेशन. नंबर सिस्टम तो करना ही है. उसके बाद जो बचा, यू शुड नो योर स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस. Is it easy to get admission in FMS? Definitely not. If it is, see, it's like डिमांड सप्लाई की वो है ना. सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो डिफिकल्ट है. It's not easy, but yeah, to get into FMS, you need to be good in VRC. VRC, I believe, they have the highest weightage in their composite score for VRC section. So, मतलब 0.4, 0.3, 0.3 रहता है. 0.4 for your VRC score, 0.3 for DLR, and 0.3 for quant, as far as I remember from my time. That is last year. Ashutosh, can we have access to only question bank by iQuanta for all 3 subjects topic wise? Is there any package? Yeah, there are 2 packages. One is this IM ABC का batch रहता है. So IM ABC batch, I'll tell you, it has 2 parts. I think roughly 5,000 odd questions रहते हैं उसमें. So first part is a static part, which you once when you enroll, you are given the access to it. You are given the dashboard. You have questions from all 3 sections, which you can solve at your own pace. और दूसरा रहता है आपका डायनामिक पार्ट. सो व्हाट हैपेंस इन डायनामिक इज, I think from next month onwards, a batch will be created, and all the people who are enrolled in the IMABC batch will be added to it. और हर रोज आपकी सुबह रफली आई थिंक 40 मिनट्स के जो आपका एक्चुअल एग्जाम रहता है उसके 3 sections, 3 events बनाए जाते हैं, एंड क्वेश्चंस आर पोस्टेड एंड यू आर गिवन टाइम टू सॉल्व. एंड once you solve that, you are provided with the solutions and the doubt solving facility. So लास्ट ईयर आई रिमेम्बर कि 2 महीने तक बच्चों ने रोज लाइक एक मॉक की तरह IMABC के क्वेश्चन सॉल्व करे थे, विच रियली हेल्प देम. काफी अच्छे रिव्यूज आए थे. एंड देन देयर इज दिस iQuanta के अभी रिसेंटली बुक्स लॉन्च किए उन्होंने इस साल.
तो यू कैन बाय दोज एज वेल, वेबसाइट पे मिल जाएगा. From where can I get good questions? What resources should we use for quant questions? So see, guys, if you're looking to crack CAT, आपको MBA करना है इस साल, you should, even if you feel that uh, you're very good, you have your things sorted, you know the concepts, you should enroll into a coaching, not just because it will give you a good resource bank of questions, but also because it will help you form a timetable. ये क्या हो जाता है कि अगर बीइंग अ स्टूडेंट इफ आई एम नॉट एनरोल्ड इनटू अ कोचिंग, मैं थोड़ा सा लैकेडाइसिकल हो सकता हूँ, मैं थोड़ा सा आई माइट बिकम अ लिटिल लेजी कि ठीक है आज मन नहीं कर रहा, बुराटी का है ना, आज मन नहीं कर रहा, आज रहने देते हैं, तो वो वाली चीज आ जाती है. बट इफ यू आर इन अ कोचिंग एंड ठीक है, दिस इज द टाइम when my other batchmates are studying, my other classmates are studying but I am not studying, मैं पार्टी कर रहा हूँ, तो गिल्ट रहेगा. And you know that आपके WhatsApp पे you have got this message, the class is starting in 5 minutes, so today is this class, then you will be compelled to attend it, compelled to learn. And it's also the concept of once you pay, once you give the money to something, you उसके value बढ़ जाता है. Something which you get for free उसका शायद इतना value नहीं रहता, but once you pay that amount, you know, okay, I have invested my money, now I have to make the best out of it. That is why enrolling in a coaching despite your level of preparation is a very good investment. Can you please tell us something you realized after converting which could have helped you better in quant? Uh, yeah, that is again the mock taking strategy वाला part इसमें आ जाता है. So what I felt was कि अगर आपके पुराने से पहले आपका VRC होता है, देन DLR होता है, देन क्वांट होता है. तो क्या होता है कि DLR में थोड़ा सा मेरा लास्ट ईयर ज्यादा सेट नहीं सॉल्व कर पाए थे, मैं अराउंड रफली आई थिंक 2 सेट करे थे, वो भी आई एम नॉट श्योर कि सारे सही करे थे या नहीं. तो उससे मेरा थोड़ा मोरल डाउन हो गया था, तो क्वांट में मेरे माइंड में वही चल रहा था कि यार वो चीज रह गई. तो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू वर्क ऑन व्हेन यू स्टार्ट गिविंग मॉक्स. आपका 40 मिनट का एक सेक्शन रहता है, वो खत्म हुआ, देन टोटली फॉरगेट इट. नाउ द नेक्स्ट 40 मिनट्स start afresh. Okay, so train your mind for that. Don't let, no need of staying in the past. अभी जो कर रहे हो सेक्शन उस पर फोकस करो मैक्सिमम. दैट इज व्हाट आई कैन सजेस्ट. सिलेबस ऑफ नंबर सिस्टम ऑलमोस्ट कवर्स अप टू 30% ऑफ द कॉन्ट्स. नहीं, ऐसा नहीं है यार, 10% रहता है नंबर सिस्टम. इज देयर एन इम्पोर्टेंट इन सेक्शनल? हाँ, सेक्शनल्स तो यार इम्पोर्टेंट रहते ही हैं. यू नीड टू क्लियर द सेक्शनल्स. आई थिंक roughly 80-85 percentile is a sectional cutoff for each section. Guys, ZAT ka we'll have a totally different session once we are done with CAT, or probably a month जब आपके ZAT के फॉर्म्स रिलीज हो जाएंगे तब कर लेंगे अलग से सेशन. अभी फोकस ऑन CAT. Is 4 months enough for CAT preparation? Again, very subjective. If you are starting from new, you are a non-engineer, 4 महीने, then I would say probably not. But if you are someone who has given exam in the past, are aware, then yeah, they are enough. Yeah, so this one important question has come up. So, how to complete a single chapter in quants from basics to advanced? Or should I do basics of all chapters, then go in deep, then go in depth? Need your advice. See, if you are preparing on your own, if you are not enrolled in any coaching and not planning to, then I would suggest कि एक टॉपिक अच्छे से करो, फिर आगे बढ़ो, ज़्यादा टाइम दो. बट इफ़ यू आर इन अ कोचिंग, देन एक टाइम टेबल आपको फॉलो करना पड़ता है. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है 2 हफ्ते, so you need to complete as much as you can in those 2 months, in those 2 weeks, because you know that a new topic will start after that. So you need to pace your preparation accordingly. हो सकता है कि आप level 1 level 2 के questions कर लो और सोचो कि ठीक है, now when the syllabus will get over in my batch, then I'll cover all the difficult level questions. So that
should be my answer for this. IIMs, FMS के अलावा what are the other best colleges for MBA which we can get through CAT? यार CAT के through IIM, FMS, I think SP Jain भी आपका CAT का score लेता है. They give profile based calls, but take your CAT score. So SP Jain is one through CAT, and yeah, I think there's no other college. बाकी आपका या टॉप 10 में तो यही है. Yeah, IAFT from this year. IAFT will also be taking the CAT score from this year. Indian Institute of Foreign Trade. It has I think three campuses. One in Delhi, the main one, then Kolkata, and then Kakinada. Apart from CAT, the second most famous exam for B schools in India is ZAT XAT, जो XLRI के लिए होता है. तो उसमें XLRI, XIMB, and some I think XISS as well. So that is the other best college exam. Sorry. या चिन्मय एज आई टोल्ड कि अभी कैट पे फोकस करो. जैट की तैयारी में इट इज बेसिकली वन एडिशनल सेक्शन दैट कम्स अप व्हिच इज द डिसीजन मेकिंग पार्ट, and that can be polished in 1 month. Itna kuch, it's not a rocket science. It's like just asking you questions, how would you react in so and so situation. So you need to, best resource for that is the previous year questions. You need to understand the ZAT maker psychology, how they approach a thing. एक ethics वाला पोर्शन तो रहता ही है, एक बिजनेस का पर्सपेक्टिव भी रहता है. सो दैट यू कैन डू इजिली इन दैट 1 month आफ्टर कैट. AI एनालिसिस प्रोवाइडेड फॉर IIM ABC क्वेश्चंस एज वेल. नहीं, आई डोंट थिंक, क्योंकि IIM ABC के जो क्वेश्चंस रहते हैं दे हैपन ऑन द फेसबुक ग्रुप विच यू विल बी एडेड टू. जो डायनामिक पोर्शन रहता है उसका स्टैटिक का, दैट हैपन ऑन योर डैशबोर्ड. आई डोंट थिंक उसमें AI रहता है. AI आपके मॉक्स में रहता है iQuanta के. If we start today from scratch, how many hours per day for 99 plus in CAT? Uh, Very subjective question. ठीक है, depends from person to person. If I start my preparation from today, then probably I need a couple of hours every day. And if someone who is starting from scratch, who has not given CAT कभी भी, तो शुरू के एक महीने में probably you'll think that you need 8 to 9 hours every day. You will think that probably you might not require that much, but you will think कि बहुत ज़्यादा है सिलेबस, तो मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा. तो दैट इज समथिंग विच यू विल बी एबल टू जज बेटर. आप तैयारी कर रहे हो तो ऑलमोस्ट आपके, सी आई थिंक अ कैट बैच इज ऑल्सो स्टार्टिंग. बैच 3 iQuanta का इस मंथ एंड तक शायद हो जाएगा. बाकी बैच 2 भी अभी स्टार्ट हुआ है, उसमें नंबर सिस्टम हो गया और अरिथमेटिक जस्ट चालू हुआ है. तो इफ यू वांट टू एनरोल, इफ यू वांट टू स्टार्ट नाउ, यू कैन एनरोल इन द सेकंड बैच ऑफ iQuanta जो अभी अरिथमेटिक जस्ट स्टार्ट ही किया है लास्ट वीक. तो आप आज एनरोल करते हो तो इस वीक आप अपना जो लास्ट 2 लेक्चर्स आपके परसेंटेजेस और प्रॉफिट लॉस कवर हुआ है वो खत्म करके यू कैन बी ऑन ट्रैक टू ऑन अरिथमेटिक एटलीस्ट. तो फॉर समवन हु इज स्टार्टिंग नाउ, you have roughly 6 months to prepare and that is very much sufficient. आपका अगस्त तक सिलेबस खत्म हो जाएगा बैच 2 में, and after that you will have the crash course coming up. You'll have your mocks. Crash course होगा आखिरी के 2 महीने में. So you'll get a very good preparation. आपका सिलेबस 3 बार हो जाएगा एटलीस्ट. आपका एप्लीकेशन क्लास रहता है, then there's also live class, and उसके बाद crash course रहता ही है. So now is the best time to start. 6 months very much sufficient for a fresher. Mahesh, Mahajan, Ritesh. Best colleges for gem fresher where gem doesn't matter. यार ऐसा कुछ नहीं है. Don't प्रिपेयर ऐसा सोच के कि कॉलेज आपको कैट अच्छा निकालोगे तभी कॉल आएंगे ना, चाहे किसी भी कॉलेज का हो. अगर आपको, मैं आपको बोलूँ कि IIM अहमदाबाद प्रॉब्ली इज नॉट द बेस्ट कॉलेज फॉर अ जनरल इंजीनियर मेल, and IIM Amritsar is better for general engineering mail. So you would not choose Amritsar solely based on because it is better for GEM. You get ज़्यादा proportion of companies
higher gem candidates. It's not that, right? You will still choose IIM Ahmedabad, even if it's the worst for gems. You will choose that because you know कि उनका जो worst है वो भी अमृतसर के बेस्ट से बेटर रहेगा. ओके, आज मैंने अमृतसर को बहुत एग्जाम्पल की तरह यूज किया. डू नॉट टेक इट पर्सनली इफ एनीवन इज फ्रॉम अमृतसर जस्ट बिकॉज आई एम ए इज फॉर अमृतसर एंड अहमदाबाद. By what month one should complete the whole syllabus and start giving mocks? See, you do not have to complete the whole syllabus before giving mocks. If you're starting now, आप 2 महीने, as soon as you are done with arithmetic, start giving mocks. That would be my strategy. Do not wait for the entire the syllabus to get completed क्योंकि आपका syllabus खत्म करते करते probably you will just have 2 months remaining for CAT. और 2 महीने पहले मॉक देना थोड़ा सा लेट हो जाएगा. एटलीस्ट आपको 4 महीने पहले 3-4 महीने पहले आपको स्टार्ट कर देना चाहिए मॉक्स देना. ओके गाइस, Chinmay is asking, can I change batches if enrolled yesterday in iQuanta for recorded format? Yeah, I think you can change batches. You can just contact support. कुछ procedure रहता है, you can do that. How to manage with stress while preparing for CAT? देखो, स्ट्रेस अगर है तो बेस्ट बेस्ट पार्ट है फिजिकली थोड़ी एक्टिविटी करो, कुछ गेम खेलो, रनिंग करो, जिम जाओ. डू नॉट फोकस अ लॉट ऑन कि थोड़ा नेटफ्लिक्स देख लेता हूँ, चिल कर लेता हूँ. क्योंकि अगेन यू विल हैव योर क्लासेस, आप जो भी प्रिपेयर कर रहे होंगे आजकल तो एवरीथिंग इज ऑनलाइन, राइट? सो यू विल बी एनीवे इन फ्रंट ऑफ योर पीसी स्क्रीन फॉर 7-8 hours a day. So again, sitting in front of the screen will probably not be the best thing to do. Just get out, get a fresh air. Yeah, guys, I think we are done with the questions. I've answered almost all of them, the relevant ones. So this session was focused on basically quant, how to tackle quant, BRC, DLR. We can have more such sessions in the future. So just let me know in the comments if this helped you. Let us know what you want in the future so that we can plan accordingly. So yeah, last 1 minute before we stop this session. If you have any other questions, feel free to ask in the chat box. यार जीके ऐप कुछ जीके ऐप बेस्ट है. न्यूज़पेपर पढ़ो ना, न्यूज़पेपर लगा लो, आपकी बीआरसी की भी तैयारी होगी अच्छी थोड़ी. You will read at least editorial sections will give you a good perspective. And you know, GK is something which, if you are aware, in general, it boosts your self confidence. अगर मैं कैट लिखने जा रहा हूँ और मुझे कोई ऐसा आरसी आ गया जो जिसका मैंने थोड़ा पढ़ा था, लाइक रिलेटेड टू दैट किसी न्यूज़पेपर में, या फिर आई हैव रेड अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स, सो आई विल बी एबल टू रिलेट, आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन अटेम्प्टिंग दोज क्वेश्चंस. गैप ईयर्स की वरी नहीं करना है यार. अब मतलब इफ यू आर एमिंग टू वेल दिस ईयर्स कैट एंड यू हैव नो आइडिया कि जॉब कहाँ से लें, कैसे लें, तो जॉब लेने से अच्छा आप कैट पे फोकस कर लो अगर आपको एमबी करनी है इस साल. प्लेलिस्ट आपको iQuanta की आई थिंक वेबसाइट यूट्यूब पे भी मिल जाएगी. डीएलआर का रहता है, देन वी आर क्वांट की पीवाईक्यूज की भी सीरीज है. मिनिमम परसेंटाइल टू गेट इनटू एनी आईआईएम, तन्मय ऐसा कुछ रहता नहीं है. इट इज वेरी मच डिपेंडेंट फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज. तो डोंट अपने गोल्स ना ऐसे मत रखो कि मेरा मुझे कोई भी आईआईएम चलेगा. डोंट बी सो डू जस्टिस टू योरसेल्फ. डोंट स्टार्ट मुझे कोई भी आईआईएम चलेगा, मुझे तो बस आईआईएम चाहिए. ऐसा नहीं होता. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कॉलेज, एटलीस्ट 20 to 30 colleges which are better than most of the new IIMs. Okay, new and baby IIMs. So be aware. बस IIM को गोल बना के मत चलो. I'm not saying this because I am from XLRI non-IIM, but basically for everyone who is preparing, I'll even give this advice to my brother, younger brother who is preparing for CAT this year. IIM is a ठीक है, आपको IIM टैग मिल गया, बट IIM कौन सा है that matters more. Okay, IIM itself is not enough. So pace your preparation accordingly. Okay, guys, it's been brilliant talking to you.
Let's see you in the other session some other day.